Pakistan is clearly aiming and tracking all reactions about what is happening with regard to Indian politicians. Pakistan media has picked up the statement of Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai on Rafale. Remember the mocking with the miniature Rafale with the Nimbu Mirchi for Buri Nazar. It was a moment that we had seen when the inauguration was happening with regard to the Rafale jets. Pakistan media has picked up the Nimbu Mirchi remark and this image. Pakistan media says, and I quote it here, opposition mocks the Raksha Mantri Rajnath Singh. Congress flaunting the model with Nimbu Mirchi, which Congress Neta had said. Why are these Rafales with the Nimbu Mirchi are lying unused? Remember Defence Minister Rajnath Singh, when the Rafale jets were inducted, had put as a part of cultural traditions. That's precisely what Ajay Rai, the UP Congress chief, is now taking a dig at. Piyush Mishra joins me for the latest on that. Piyush, clearly I believe that Pakistan media is clearly tracking every little comment that is being made by the Indian leaders, especially opposition. Tell me more about this. Well, Pooja, a couple of days back, Ajay Rai, who is a senior Congress leader who comes from Uttar Pradesh, he had issued a video in which he was seen holding a toy aeroplane. That was also, he was calling that it was a model of a Rafale jet in which the Nimbu Mirchi was also hanging. And he was asking from the government as to when the government is going to take actions against the terror attack which has been carried out by the Pakistan. And that entire video and clip has been now picked by Pakistan, and it is also somewhere trying to make a joke out of it. So we are now seeing how the politics taking place, and Pakistan is using that video of Congress leader Ajay Rai. But BJP earlier had hit back at Ajay Rai. Though the politics is taking place on this entire matter, the government is very much stern. In the last few days, we have seen how PM Narendra Modi has been chairing series of meetings. He had cut short his Saudi Arabia visit, and soon after landing in Delhi, he had held a meeting with NSA Ajit Doval, S. Jaishankar, Foreign Secretary, and after that, two CCS meetings have taken place since Pahalgam terror attack, and the government time and again has made it very clear that it is going to take firm and decisive action. And in the last few days, we have seen how Prime Minister himself has met with Navy Chief, Army Chief, Air Marshal was also there in that particular meeting. So the decision has been left to security forces. Mode and timing will be decided by the security forces. That's what the government is saying. But on the other side, we are seeing how the politics is taking place, and even Pakistan media has also because I want to bring to the viewer what exactly happened. The first week of full-on unity between the opposition and the government, there is clearly now a diversion in that. Leading the charge here is UP Congress President Ajay Rai. What he did was basically hold out a certain miniature, so to say, a representative one of the Rafale jets. Added the Nimbu Mirchi on that, which is usually for Buri Nazar as part of cultural tradition, but also that had been done by the Defence Minister when the Rafale jets were being inducted. He's used that moment to say, why are these Rafale jets unused? However, Congress MP Priyanka Gandhi tried to soften the blow. She distanced from the party from the statements made by Rai and said they are with the decision and the action that the government of India will take. Moving beyond this, Jamia Chief Arshad Madani also kicked the hornet's nest with his question on India's move to suspend the Indus Water Treaty with Pakistan. But amid all of this, the BJP constantly responding to the comments. BJP is accusing Congress of trying to now defame the armed forces, that this is the nation's security apparatus that they are questioning too. Let's listen into what exactly was said and responded to how. आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं. आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है. रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है. ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है. जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी. इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है
इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है बांधकर, इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। The Congress party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को बाबा। पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए। जो लोग आतंकवादियों को सहानुभूति दे रहे हैं, उनका भी देश की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को इनका संज्ञान लेना चाहिए। मदानी है, उन्होंने जो बात कही है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि अभी उनका पाकिस्तान प्रेम कहीं ना कहीं झलक रहा है। हमने अपने दुश्मन का पानी रोका है, ना कि हिंदू मुसलमान इसमें किया है। उसने जब उस पर तो कोई नहीं बोलता, जब लाशें बिछी थी, उनको मारा गया, हिंदुओं को एक एक देख करके धर्म पूछ करके मारा गया, उस पर ये कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जब पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान के साथ इनकी भी सांस रुकने लगती है। इसी कारण से ये इस प्रकार की बातें, इस वक्त इनको चुप रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वही देश में खराबी कर रहे हैं। कि देश का जो सुरक्षा का मामला है, देश की जो विदेश नीति है, सुरक्षा है, इसके लिए केंद्र सरकार है, देश की संसद है, वहां पर बैठे हुए लोग, जिनको भी पूरे देश की जनता ने मिलकर ये जिम्मेवारी दी है, वो लोग काबिल लोग हैं। हम लोग के नज़र में वो काबिल हैं, तभी तो देश की जनता ने उनको चुनकर वहां बैठाया है। एक व्यवस्था बनी हुई है, संसद है, सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, सेना है। उस व्यवस्था के तहत ही इन बातों पर निर्णय होता है, उस व्यवस्था के तहत ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। गांव में बैठकर कोई व्यक्ति खड़ा होकर क्या बोलता है, कोई मुखिया ने क्या बोल दिया, विधायक ने क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, कोई विशेषज्ञ ने क्या बोल दिया, उसका महत्व नहीं है। देश के ये गंभीर मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय राय का बयान आपत्तिजनक है, राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एकताबद्ध तरीके से सेना के प्रति विश्वास दिखाया।